Hi everyone, I'm Manal. I'll be your host for the evening. And on behalf of Bits Embryo, I'd like to give you all a very warm welcome to the entire cast of Bravehearts present with us here. So I'd like to say a few words about the show itself before we begin. Now, Bravehearts is a very heartfelt show about the countless soldiers and their families who've given immense sacrifices for the nation and its citizens. The show talks about these stories and highlights issues that weren't discussed very often before. And each episode leaves you with this feeling of pride and immense respect for the real brave hearts of our country. So I would like to go, Sandeep sir. So your character plays a very important role in Kishore's life and acts as a beacon of hope for him and eventually leads him to the army itself. So what do you think is the importance of your character in the entire episode? And would you say there's a similar person in your life that plays a role for you? Ah, okay. I think first I'm gonna go into the character. First of all, hello guys, hi everyone, and so I think for as far as Bhanu is concerned, I think he was a catalyst in in the story. I think it's predominantly what Shakti sir's character and what Omkar's character. It's their journey. How it's not only about how Omkar finds his true Kishore finds his true value and worth. It also is how Master G's characters also is looking out for some a part of, let's say, an energy in their life, and how they all come together while Kishore is doing what he's doing in the show. I think he just works as a catalyst. I think yes, I think there's not one person like Major Bhanu in my life. I think there are multiple people, and I think all multiple people have been doing their small bits of helping me to be a better person or a better actor or a better human being. I think it's just not one person, but there are definitely multiple people doing their bits. So yeah, yes, I do have a lot of major Bhanus and Bhanis. Okay, so I have a question for both you and sir. What was it like working with Shakti Kapoor, sir, who is arguably one of the biggest icons in the Bollywood industry? So, what was he like working with? he was he was like our friend. I mean, like the first day I read with him, Sandeep and I met on set directly, but I met Shakti sir at a reading in the office first. And like at the first reading, it was as if like we've known each other all our lives. So like, right, I feel like I think Sayan would also agree. On the first day of our shoot, we were just like, right from the get-go, we were chilling, all of us. Like we were just like casually talking, like we were talking about like random things, and we were just like immediately straight up, like not even bonding, like we were already bonded. It's a very big thing on his part, because it makes you absolutely comfortable with being with that person, honestly. And once there is, like, when you're acting, you can't have that inhibition of, oh, like this is a slightly bigger person, or this is like a really big star, and because that can, interfere with your performance. But he made sure that there was none of that from his side, and he was like superb, and he was super friendly right from the get-go. And I think that gave us a lot of comfort, being our characters, I feel. Are you Yeah. using this filter because you really want black and white, because you really want to tell you are chuddy buddies from the Shakti sir? Sure. I mean, I'm an aesthetic kind of guy. I mean, black and white seems like my thing. Yeah. Yeah, Shakti sir seems like a very down to earth and humble person. Yeah, sure, I for think sure. I think that's what we also felt, because anytime as a actor who's just started off, or when you're working with somebody who's and he's an FTI pass out actor. He's a very, like, he has proved his mettle multiple times, and that there's a great craft is there behind him. So when you go, you usually, like, as very correctly Omkar said, because you're always in that dilemma that you've got to do a scene with somebody who has done so much of plethora of work, and how do I break that comfort? How do I do this? Because it's so much of it's a reacting. Acting is reacting, so you're reacting with the person, and how do you break out of that? He is just so at ease. He just makes you at ease, and I think what I really took from him was that how easy he is into the scenes. Like, he would do some random stuff before the scene. Like, over here as actors, we are like,
oh, this is a serious scene. Okay, we are doing our full mental preparation. Oh, I need to feel this. This is the beat. This, and he would just walk around, talk to people, probably order his chai, and then be like, oh, we're rolling, and he's there. He's there. Like, you know it as a co-actor that he's there. And I think that is something which I think as an actor I had a pleasure to learn, because it's just so detached yet so attached, and so there is a beautiful skill to have as an actor. Sounds like a wonderful person to work with. Yeah. And Uh, how? so- Sorry, I need to ask this question. How many of you know the real name of Shakti ji? Whoa, trivia time. I don't Oh, know. What? He has been named Shakti by Mr. Sunil Dutt. Oh, yes. He was launched He was in telling us. Rocky. He mentioned that his real name is Sunil Kapoor. Oh, Yeah, wow, nice. yeah. Please continue. Something so we guys didn't know about. Thank you for that. So Anushka ma'am, my question is for you. Like you played the role of a wife of a person who was in army and later off gave it all for the nation. And then you followed his footsteps and you played the similar role by entering the army. So my question for you is, was there any inspiration for you behind that role? Like, did you follow someone or you got in touch with someone for that role? so I'll just share one story. So when I stepped out from my hometown for the very first time, because I am my native place is UP Saharanpur, and when I stepped out for my graduation thing, why I joined Delhi University was this dramatics. So the first audition I gave was a very similar kind of an act which I did. Like मैं ऐसे वाइफ हूँ और मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना पका रही हूँ, मैंने चीजें तैयार करी और मैं तैयार होकर, and as I open the door I see a coffin coming in, and that I don't know, after I think what 6-7 years I got a very very similar kind of a script. So I think it was there in my heart somewhere. So and it was always, I mean, there's this very particular thing I do in the story as well, like respect. So that is the only thing that is something I feel like मैं लव से भी एक स्टेप ज्यादा रिस्पेक्ट को देती हूँ, और आई थिंक दैट इज द रीजन दैट आई हैव फॉर द इंडियन आर्मी. और हम सबका ही है वो चीज. हम कितना भी हम लोग जब एक इंटरनेशनल फ्लाइट लेके वापस आते हैं ना, और जब when we breathe in this air, no, I mean that's so beautiful feeling. और वो इंस्पिरेशन ऐसा था कि मतलब उसके लिए मैंने प्रिपरेशन बहुत अलग तरीके से की, बिकॉज मेरा फैमिली जो है वो इंडियन लाइक फोर्सेस से ऐसे नहीं है. But my co-actors, everyone, in fact the crew, the people in the crew, they had people who were there already in the, you know, they had their generations in the Indian Army. In fact Varun, तो इन लोगों ने मुझे बहुत बहुत ज्यादा हेल्प किया. And then I was watching a lot of videos, lot of content. So yeah, that's how it has helped me. And ma'am, another question for you as well as the rest of you. What was it like to put on the Fauji Vardi for the first time? Did it feel different? I think it's difficult to put in words for sure. I mean, it's a different kind of a feeling. I mean, it's not only, I think it starts flowing in your blood. मतलब वो हम लोगों को explain करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हम लोगों ने उसका एक बहुत ही छोटा सा ग्लिम्स, मतलब we were shooting for few days, तो उसका एक ग्लिम्स हमने जिया, और वो जीना भी इतना खूबसूरत था. So for all the people who are there in the army, who are living that life, it is just respect. It's a beautiful feeling for sure. Sandeep sir, do you have something to say about this? I think, like, I'm very sure there are so many boys like this, and I know that for a fact. Like during the school time, I think in 10th, 11th, in about 9th, 10th, you got to decide what you want to do. And I think army was definitely like NDA was definitely a thing for me, and I really wanted to do it. And the only thing which stopped me was that you had to take science. So I was like, science to nahi ho payegi. So it's okay. So at that moment, I had to take that step back, because obviously I also need to understand as a student who I am and where I am at. But I think it was always there. It's a part of many dreams which you have as a child. And then when you get to do it,
I think somewhere a part of that heart got fulfilled when I did my costume trials for the first time in the dice office, and it just, there's something about it, like you can't explain it with words. It's a feeling. I think it's how you feel when you look at Reigns for the first time. It's just something which you can't express, but there's a joy to it. So it was definitely that joy which I felt, and it was great to wear it on set. I think I Okay, owed it, so so I was like, yeah, that's nice. so साइंदीप सर, जैसा आपने बोला कि you always wanted to join India and all, आपका orientation उस side था. So this is a question for all of you. आप में से कोई एनसीसी या इस टाइप की कोई आर्मी या फिर इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनरोल्ड था क्या? Varun, you need to answer this. If I may, yeah. So I'm a Fauji kid, and my dad is a retired general. So I've grown up in cantonments, and I've grown up amongst officers all my life. This story itself was so amazing to have gotten to be a part of it, because even though I've grown up with these people, I've very closely seen their lives, but to see it even closer through my own lens and through this story, I kind of understood it a little more. And answering your previous question, in fact, about the uniform, I've seen my dad go to office. He's gone on a couple of missions here and there throughout his tenure in the army. But for the first time, there were so many scenes which, when I did them, I just felt so much closer to my father and the uniform and the forces, understanding what plight they go through, and what it is like to just be so selfless and be serving the nation. So it's been a beautiful experience for me, to be very honest. I just, hats off to my dad. I just love him a little more now. I thought that wasn't enough, but yeah, it's pretty possible. Yeah. Rohit sir, I have a question for you. What all did it take for you to get into the frame of mind to play your character, Amar? When I first time met the director Happy sir, I don't know, इससे पहले जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा था, मैं कहीं ना कहीं अपने किरदारों में काम कर रहा था उनकी कैरेक्टराइजेशन में, बिकॉज आई थॉरली बिलीव कि कैरेक्टराइजेशन बहुत जरूरी है कोई भी किरदार निभाने के लिए. बट जब मैं हैप्पी सर से फर्स्ट टाइम मिला एंड उनको पता था कि मैं एक प्रोजेक्ट करके आ रहा हूँ, एंड वो प्रोजेक्ट के वो कैरेक्टर के लिए मैं 2 महीने ऑलरेडी दे चुका था कैरेक्टर को. तो जब मैं उनसे मिला, तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, फाइनल स्क्रिप्ट, तो मैंने उनको बोला कि मैं सर पता नहीं क्यों मैं टिंकू पे काम नहीं करना चाहता बिल्कुल भी, एंड मैं जो उसके इर्द गिर्द जो कहानी है, जो समाज है उसकी तरफ, जो जिस नजरिए से समाज उसको देखता है, तो मैं चाहता था मैं वो पढ़ूं, पहले मैं जानूं उसकी बाहर की दुनिया कैसी है. मैंने कहा इस बार इस तरीके से काम करेंगे कि मैं टिंकू को साइड रख दूंगा, एंड जो उसके आसपास की जो सोसाइटी है, जो लोग हैं वो कैसे हैं. तो आई थिंक जब मुझे फाइनल स्क्रिप्ट मिली, तो मैं रात को सोने से पहले रोज वो कहानी पढ़ता था. और आई थिंक जब एक राइटर एक कहानी लिखता है, तो ऑब्वियसली उसके पास एक लिमिटेशन होती है 10 पन्नों में या 12 पन्नों में या 15 पन्नों में. लेकिन जब आप एज एन एक्टर एक कहानी रोज पढ़ते हो ना, तो आपको समझ आती है कि वो कहानी जितनी लिखी गई है उससे बहुत ज्यादा गहरी और बड़ी है. तो आई थिंक मैं रोज सोने से पहले वो कहानी रोज पढ़ता था, एंड आई थिंक वो जैसे जैसे मैं पढ़ता गया ना, मुझे अपने ऊपर काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे कैरेक्टराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी. आई थिंक मैं समझता गया कि लोगों का नजरिया मेरी तरफ क्या है. मैं कूड़ा बीनता हूँ, तो आई थिंक लोगों को लगता है कि जो गरीब लोग होते हैं उनको हक नहीं है सपने देखने का. जो जो जिनके पास पैसे नहीं है, आई थिंक वो एक सर्टेन फील्ड में जा नहीं सकते हैं. तो आई थिंक यही था. जैसे जब मैंने अपनी कहानी देखी, जब फिल्म बन के आई, जब मैंने देखी, तो एक वॉक है जहाँ पे मैं एकेडमी में जाता हूँ. जब अनूप सर मेरे को एकेडमी में ले जाते हैं भर्ती के लिए, तो वहाँ पे एक वॉक है जहाँ मेरे हाथ आगे को बंधे हुए और मैं चल रहा हूँ बस. एंड वो मुझे याद भी नहीं कि मैंने वो कब की, बिकॉज वो बहुत नेचुरल था. आई मीन मैंने वो प्रिपेयर नहीं किया था कि मैं ऐसे चलूंगा, बट मैं वो कहानी इतनी पढ़ चुका था, मैं इतना जी चुका था उसको कि आसपास के जितने भी लोग हैं वो मुझे उसी नजरिए से देखते हैं, और मैं कूड़ा बीनता हूँ. तो आई थिंक मैं अपने हाथ सीधे कर नहीं सकता उनके सामने, या फिर अपनी नजरें ऊपर नहीं कर सकता. आई हैव टू लुक इन अ सर्टेन वे, माय पोस्चर शुड बी इन अ सर्टेन वे. तो आई थिंक मैंने प्रिपरेशन इस तरीके से की, मैंने बस आसपास के समाज के लोगों को जाना कि वो क्या है. आई थिंक वो हो गया. आई थिंक मैंने सिर्फ बहुत ज्यादा प्रिपरेशन नहीं की, बस मैं कहानी पढ़ी, मैं कहानी में घुसने की कोशिश करी. तो आई थिंक दैट्स हाउ इट हैपेंड.
तो Oh, सर मेरा एक और क्वेश्चन आपसे ही है कि जैसे हमने देखा कि टिंकू का तो एक हिडन टैलेंट था कि वो काफी अच्छी शूटिंग करता था। तो सर आपका ऐसा क्या हिडन टैलेंट है जो हमारी ऑडियंस को नहीं पता होगा ऐसा? स्टार कास्ट में बाकी लोग भी इसको आंसर कर सकते हैं अगर सर इसका आंसर ढंग से ना दे तो। भाई क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं। आई थिंक मैं खाना खाना अच्छा बनाता हूँ. आई कैन कुक गुड. सो अरे या आई वाह. मुंबई आके आई थिंक खाना बनाना सीख चुका हूँ. दिस इज माय हिडन टैलेंट. मैंने रियल राइफल शूटिंग की हुई है और मैं अपने आप को अच्छा निशानेबाज मानता हूँ. उसकी वजह यह है कि हम जब मेले में जाते हैं ना गुब्बारे फोड़ने के लिए, तो माई सन चैलेंज मी और उसने बोला पापा 20 स्टेप्स पीछे जाओ और वहां पे आपको याद होगा पुराना 5 का कॉइन होता था सिल्वर का छोटा सा. सो ही आस्क्ड मी टू शूट दैट, एम ऑन दैट. मैंने उसको जिस दिन उड़ाया 5 के कॉइन को इतनी दूर से, उस दिन से मुझे लगा कि हाँ मैं अच्छा निशानेबाज हूँ. तो शायद ये मेरा कनेक्शन है पराग के साथ. इस स्टोरी में मुझे वो बहुत ज्यादा अपील किया इस चीज में. On the same lines, in fact, when Rajavardhan Singh Rathore had won the gold for India in the German air rifle firing, the army had started a campaign where they were looking for youngsters in school, 16, 17, under 17, and they were looking for shooters. So my dad was in Ambala at that time, which is Western Command for the country, like the way it's divided. So my Western Command I was a silver medalist with a German air rifle 10 meters shooting. That's another hidden thing. And I sing also. So that's another, I don't know if it's a hidden talent because it's all over Instagram. Nothing is personal anymore. But yeah, that's another talent. और ये आई नेम्ड रोहित को मैंने पराग बोल दिया. सॉरी रोहित. नहीं कोई बात नहीं सर. रोहित पतगाई. ओके कोई प्रॉब्लम नहीं सर. Nazneen ma'am, do you have any inputs for this question? For hidden talents, first of all, let me tell Rohit कि आपने बोला आप खाना अच्छा बना लेते हो, लेकिन अभी हमको सैंपल करना पड़ेगा, तो कब आया अपने आप? Yeah, I mean, for I sure. can't just Someday believe for it sure. ना, ऐसे ही हम कैसे believe यस कर यस लेना? यस. अभी डिनर तो करना पड़ेगा. Someday for sure. डिनर अरे हो भाई तो बस करो. कुछ भी चलेगा. ओंकार भाई जीने दो. I think that my hidden talent, it's called a talent, is I'm a leftover queen. I don't know if you understand what that means. I have 3 kids. They're growing up. They're teenagers and a little one, and I juggle my work and I juggle my home simultaneously on an everyday basis. And so breakfasts and tiffins and everything. So I think that that's one of my biggest hidden talents. I'm a leftover queen. Beautiful. I think that I have a lot of talents which everyone knows about, but this one no one knows. Is that जो फ्रिज में है उसको कैसे फटाफट एक टिफिन बना दे जो यमी होके सब खा के आ जाए. Which I don't mind. रोहित आप आके सैंपल भी कर सकते हैं. नाज़नीन मैम, एक और क्वेश्चन इसी पे. आप वॉइस ओवर एक्टिंग भी करती हैं, तो इज इट मोर चैलेंजिंग देन रेगुलर एक्टिंग, और क्या क्या जाता है वॉइस ओवर एक्टिंग में? I like to call myself a voiceover professional. Unfortunately, I haven't had the opportunity to do a lot of a voiceover acting. I think voiceover acting requires a lot of emotion and drama, and that's used a lot in audiobooks or cartoons or dubbing. I have done them few and far between. The challenge for any, I think, voiceover artist, especially when you're doing corporate work or maybe a pitch or a conference, is to blindly be able to already understand your audience and what they're looking for and sell that product or pitch the product or convince the product only with your voice. 9 times out of 10, we're just meeting the client there and then. It's a cold read to understand it immediately and to make it sound believable within that one slot of studio hour. I think that that's what keeps me going. It's very challenging to try and guess what do they want really, and maybe sometimes give them a little more than what they want. Sometimes you get a client who doesn't know what they want, and that's when I think it's really challenging. But yeah. So thank you मैम. So रोहित सर, मेरा क्वेश्चन अब आपसे है कि आपने जैसे अनूप सोनी सर के साथ काम किया,
now we all have seen Anup Soni sir in Savdhan India. So I have a personal question कि आपको कैसा मतलब अनूप सोनी सर कैसे हैं साथ में काम करने के लिए? What was your experience like? यार तुमने बालिका Okay. वधू क्यों नहीं बोला? Why don't you say सावधान? मैंने सावधान देख रखा तो And I think it's Just- crime just patrol, no? Crime It's not. Patrol. Yeah, it's yeah, crime No, patrol. Savdhan. Yeah. It's Savdhan India. No, it's Uh, crime patrol. Patrol. Savdhan Basically- is Patrol. done by someone else. Did सावधान में ये actually- सतर्क all of रहिए. them? हाँ वो सावधान में भी आए हैं, क्राइम पेट्रोल में भी आए हैं, दोनों काफी में ही आए Yeah. हैं। दोनों में है। all of it. हाँ तो कैसे Yeah. experience Yeah, था sorry सर to आपका? interrupt you. Yeah. Yeah, it's okay. So I'll go to my past, my flashback. Actually, मैं जब नाटक करता था अपने स्कूल में, हम नाटक करते थे. तो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ उधर, मैं पहाड़ से बिलोंग करता हूँ, उधर ऐसे प्रोफेशनल थिएटर्स नहीं होते हैं. तो जिस टाइम हम नाटक करते थे तो हमको पता चला था कि NSD नाम की एक जगह होती है जहाँ पे एक्टिंग पढ़ाई जाती है, नाट्य शास्त्र पढ़ाया जाता है, सब चीज़ों की पढ़ाई लिखाई होती है. तो हम ऐसे ही सोचते थे कि यार मतलब वहाँ के लोग मतलब कैसे होते होंगे ना, मतलब हजार, मतलब इतने सारी, मतलब आई थिंक 18 या 14 लोग निकलते हैं हर साल. तो मैं सोचता था कैसे होते होंगे. तो जब मैं मुंबई आया उसके बाद मैं पृथ्वी थिएटर जाता था नाटक देखने. सो आई थिंक एक कुछ प्रोग्राम था, एकजुट थिएटर का कुछ एनिवर्सरी थी, तो वहाँ पे अनूप सर आए थे. एंड फर्स्ट टाइम मैंने अनूप सर को रियल में तब देखा था. एंड मैं ऑडियंस में बैठा था, अनूप सर सामने स्टेज में बैठ के अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे Wow. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का, एंड अपनी जर्नी बता रहे थे. तो और वो दिन के लाइक जा रहा था घर, एंड लाइक ऐसा था कि अब मुझे पता था कि शायद मुंबई आ पाऊँ कि नहीं, या फिर एक्टिंग कंटिन्यू कर पाऊँ कि नहीं, बिकॉज आई वाज गोइंग थ्रू सम फैमिली प्रॉब्लम्स. एंड मेरे डैड का बिजनेस है, उनकी शॉप है. सो मैं चले गया था घर उस दिन. उसके अगले दिन चले गया था और दुकान देखने लग गया था पापा की. तो उससे पहले वो मेरा एक दिन था मुंबई में लास्ट, जब मैंने अनूप सर को देखा था. तो ऐसे ही मतलब एक था कि मुझे भी वहां जाना है, जहाँ पे अनूप सर बैठे हुए हैं, वहां के अपनी जर्नी बतानी है एज एन एक्टर. तो मैंने फर्स्ट टाइम उनको वहां देखा था. एंड फिर मैं घर चले गया था. एंड लाइफ चलती गई. एंड when I first time came to know that from the team of Dice Media that Anup sir is playing Tribhuvan. So I was like shocked for 2 minutes. Like मुझे सब मेरी जर्नी याद आ गई कि जब मैं मुंबई छोड़ के जा रहा था, एक्टिंग छोड़ के जा रहा था, तो मेरे सामने अनूप सर बैठे हुए थे फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. एंड मैं उनके साथ काम करूंगा. तो मेरा बहुत मन था उनसे बात करने का शुरुआत में, जब हम रीडिंग में गए तो. बट हैप्पी सर ने बोल दिया था और संकल्प भैया ने बोल दिया था कि आप दोनों बातें मत करना ज्यादा, आप, बिकॉज आपका जो शुरू का जो सीन्स है उसमें एक वो डर, एक, क्योंकि मैं एक सर्टेन जगह से बिलोंग करता हूँ और वो एक ऑफिसर है, तो वो एक दिखना चाहिए सीन में कि आप लोग बात नहीं करते उतना. तो स्टार्टिंग के 2 दिन तो मैंने खुद को कंट्रोल किया, सर से बात नहीं करी अनूप सर से. वो डर नॉर्मली मेरा था, वो जो डर दिख रहा है वो शायद रियल ही था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं सर के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा था. बट 2 दिन के बाद फिर मैं सर से बहुत सारी बातें करी. मैं सर को बताया कि सर मैंने आपको वहां देखा था. फिर सर से मैं सर की जर्नी पूछी, और सर ने बहुत ही जैसे फ्रेंडली वे में होता है ना, कि सर ने बहुत ऐसे बताया कि यार मैं मुंबई आया था, तो नेशनल स्कूल ड्रामा के बाद में आया, तो मैंने यहाँ नाटक किया, फिर ये सीरियल किया, फिर फिल्म करी है वो. तो वो बहुत ही ज्यादा हम्बल है. आई थिंक जैसे ओमकार ने बताया, फिर सैम भैया ने बताया कि शक्ति सर इतने हम्बल हैं. तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है ना, आप जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस क्षेत्र में, जितने भी बड़े एक्टर्स हैं ना, उन सब में एक चीज कॉमन है कि वो लोग एकदम हम्बल रहते हैं. और एक और चीज ये है कि वो अपने कभी किसी को एक्टर को ना ऐसा फील नहीं होने देते हैं कि आप न्यू कमर हो, या फिर मैंने आपसे इतना ज्यादा काम किया है. बिकॉज दे आर प्रोफेशनल, दे नो अगर आप अपने सामने वाले को एक्टर को कहीं भी ऐसा फील कराओगे ना, तो वो परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा. एंड कहीं ना कहीं उनका भी आई थिंक मोटिवेशन हिट होगा. सो आई थिंक ये मेरी पूरी जर्नी है अनूप सर को लेके. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा सर के साथ काम करके. लाइक मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो चीज ऐसे मतलब वहां से छूट के यहाँ कंटिन्यू होगी. So I think it was amazing experience working with Anup sir. Yeah. एक नमन सर और ओम सर, आप दोनों ही चाइल्ड एक्टर्स रहे हैं, तो आप लोग बचपन से ही मेरा नाम गिरीश है, वो मेरे बेटे का नाम क्लैश हो रहा है, सॉरी. I was wondering what I got Girish, wrong. yeah. Call you Sorry, Girish all my life. I'm logged in from his laptop, so I'm sorry, and I don't know how to fix it. So I'm so sorry. Girish, it's Girish Sahdev. Yeah. मुझे लगा मैं ओम हूँ. मेरे को मुझे I लगा think I thought ओमकार को मैं तो बोलते चाइल्ड हैं. एक्टर नहीं रहा हूँ. But sorry. तो Yeah. how do you manage work along with academics? काफी मुश्किल होता होगा. No, so actually स्कूल के टाइम when I used to work, तभी तो मॉम ऑफ कोर्स जाती थी स्कूल में और प्रिंसिपल सर या वाइस प्रिंसिपल को बता देती थी.
that this time के लिए मैं नहीं हूँ या मुझसे school attend नहीं होगा, तो they always used to cooperate. They always used to listen to us, and they used to postpone the project submissions and exams sometimes. And sometimes when it wasn't manageable, I used to go, and the set people would understand. So both of them, like both sides से बहुत cooperation था, and touchwood till date I haven't faced any problem, and it was very smooth. Like I genuinely never ever had a problem between my academics and work life. एरी सर, अब मेरा क्वेश्चन आपसे है। मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें आप बोलते हैं कि नेगेटिव कैरेक्टर रोल्स ऑन स्क्रीन अपील मी। तो सर, आप नेगेटिव कैरेक्टर्स तो काफी लेते रहे हैं, लेकिन सर आपके लिए ये एज अ सोल्जर ये वाला कैरेक्टर लेना कैसा रहा? बिकॉज ही वाज सफरिंग फ्रॉम पीटीएसडी, सो हाउ वाज इट लाइक? मेरी सोच थोड़ी फिल्मी है, और मैं फिल्मों की वजह से यहाँ पे एक्टर बनने आया, इसलिए मेरा अंदाजे में यहाँ भी थोड़ा सा फिल्मी होगा। ओम शांति ओम में एक डायलॉग था शाहरुख खान का कि जितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की, उतनी ही इस कायनात ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। बचपन में मैं शो देखता था मिलिट्री बेस्ड कॉल्ड परमवीर चक्र, सागर रामानंद सागर ने बनाया था वो, जिसमें हर एपिसोड में एक अलग प्रोटैगनिस्ट होता था और वो उसकी कहानी होती थी। तो बचपन में मुझे नहीं पता था कि मैं एक्टर बनूंगा या इस फील्ड में या बॉम्बे कभी आऊंगा, तो तभी से एक चाह थी कि अब कभी ऐसा मौका मिला तो जरूर ऐसा करने को मिला तो मैं करूंगा। अब से लगभग 20 साल पहले एक सीरीज बनी थी मिशन फतेह, उसमें मैंने किया था फौजी का रोल। फौजी दुश्मन को मारता है, उसका हीरोइज्म है, वो तो हम सब जानते हैं, और उसके लिए सैल्यूट है इंडियन आर्मी को। लेकिन अब जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो डाइस मीडिया ने जिस तरह की स्टोरी सिलेक्ट की और जिस तरह के इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर आया बाहर, इसके लिए इट्स रियली कमेंडेबल जॉब। इस तरह की कहानियों को चुनना और अपने में ये विश्वास रखना कि हम इसको लाएंगे, लोग इसे पसंद करेंगे, और कसम से झकझोर के रख दिया। हर कहानी ने, हर एक्टर ने, कोई भी एक्टर मुझे किसी कहानी में ऐसा नहीं लगा कि एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी अपने कैरेक्टर से बाहर हुआ हो। और दूसरा मैं बोलना चाहूंगा भरत मिश्रा को, जहां पर वो एक ऐसे फौजी की कहानी लेकर आया जहां उसकी लड़ाई अपने आप से है, पोस्ट वॉर ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं। इस चीज को आई थिंक छुआ नहीं गया है ज्यादा, और हमारे पास कहने को है सिर्फ 20 से 25 मिनट या आधा घंटा, उसमें हमें बहुत सी बातें कहनी है। तो वो करना, डायरेक्टर का कन्विक्शन, उसका मुझ में विश्वास कि हाँ गिरीश जी इसको कन्वे करेंगे, और जो मुझे को एक्टर्स मिले इसमें, आई एम रियली थैंकफुल टू नाजनीन, क्योंकि मेरे लिए सब सरप्राइज पैकेज थे। सर नाजनीन को मैं वन ऑफ द एक्टर्स समझ रहा था, सॉरी नाजनीन आई एम सेइंग दिस, मेरे को लगा ठीक है आई हैं फिल इन द ब्लैंक्स। मैंने कहा आप थिएटर एक्टर हैं क्या? कहते हाँ मैं हूँ और मैं वॉइस आर्टिस्ट हूँ। तो मैं वही समझ में आ गया कि हाँ इनका नोट जो इन्होंने नोटेशन जो यूज किया है, जो सुर लगाया है, वहां से समझ में आ गया कि भाई अच्छी एक्टर है सामने, मजा आएगा। और नमन की अगर मैं बात करूं तो रोंगटे खड़े कर देना वो नमन के साथ हुआ। नमन ने, मुझे नहीं पता था कि वो इस तरीके से अपनी चीजें कहने वाला है किसी सीन में, और मैं एक्चुअली अपने डायलॉग भी भूल गया, उसने इतना बढ़िया परफॉर्म किया। और हमारे जो थैंक यू सो मच। हाँ, तो चौथे एक्टर थे जो मेरे कलीग बने थे इसमें, उनके लिए भी बहुत तारीफ। नाजनीन के लिए मैं इसलिए बोलना चाहूंगा कि नमन और मैं तो स्क्रीन प्ले वाइज हमारा क्लैश था, लेकिन हमारे बीच में जो बैलेंस करना था वो नाजनीन ने बहुत ही ब्यूटीफुली उसको कन्वे किया है। मैंने हर स्टोरी को 3-3 बार और अपनी स्टोरी को 5 बार देखा है, थोड़ा सा बायस। हाँ, वो बैलेंस बहुत अच्छा रहा, और ऑलमोस्ट नहीं, हर कहानी के एंड में आंसू निकले हैं। ये एक बहुत कमाल का एक एलिमेंट जो है था हर कहानी में था। और भरत मिश्रा की टेकिंग्स और हमारी टेक्निकल टीम एंड, तो इसके लिए आप सब एक्टर्स को, डाइस मीडिया की पूरी टीम को, सबको बहुत बहुत बधाई। एक अच्छी शुरुआत हुई है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इसका एक हिस्सा रहा हूं और अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूं।
हाँ सॉरी, No, no, I नेगेटिव would रोल्स just की like बात, to add. जो क्वेश्चन था वो जवाब नहीं दिया मुझे हमेशा मुझे हमेशा रामायण में रावण ने अपील ज्यादा किया है। मुझे हमेशा महाभारत पढ़ूं तो दुर्योधन ने और जो नेगेटिव रोल्स थे उन्होंने ज्यादा अपील किया है। तो मैं तो यहाँ पे टिपिकल बॉलीवुड विलन बनने आया था, टिपिकल बॉलीवुड विलन। लेकिन वो जर्नी ऐसी रही कि यहाँ आके समझ में आया कि नहीं भाई, रियल एक्टिंग भी होती है कुछ, और थिएटर करना पड़ता है, और ऐसे तिलक लगा के काला कुर्ता पहन के घोड़े पे बैठ के आप विलन बन जाओ, ऐसा नहीं होता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मारना पड़ता है, मरना पड़ता है चीजों के साथ। और नसीर सर ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि एक कैरेक्टर को निभाने के लिए आप 11 करोड़ से ज्यादा रीजंस सोच सकते हैं, जिसमें से वो खुद भी अभी तक 63 या 64 तक ही पहुंच पाए हैं। तो सोचिए कितना अनंत, कितना अथाह, कितना गहरा मीडियम है ये, जिसमें उतरने के लिए आई थिंक 1000 जन्म भी कम है। तो मैं लकी समझता हूँ कि मुझे इस तरह का मल्टी लेयर्ड कैरेक्टर करने को मिला। थैंक यू। Sorry, without your questioning, I have to add over here कि I completely agree that the selection of stories is absolutely exceptional. Dice Media has done a great job on that front. Of course, I think I should applaud them for the cast, including me. But thank you very much. I was very, very excited. And on the first day, when they said reading karenge, I just got so excited. It brought back all my memories of theater. And I think that that was the greatest thing that they did when you rehearse something and the way everything was scheduled. I even told Bharat sir, I said, this is brilliantly done. And thank you very much, Girish, for your lovely, kind words. I have to say that it was so comfortable being with you, so comfortable. You put me at ease, and I realized that we were just being ourselves, and it was very effortless, and it brought out the same in me. So thank you for that too. And of course, I have to say for Naman that we were literally just reacting. We just needed to look at him. We didn't need to think about we're upset, not upset. We just had to look at him and react as a normal person. It's just absolutely brilliant working with Naman. There's no other way to explain that. Thank I'm you very so much. excited and Thank you very so much. grateful to be a part of working with both of you and with Dice Media and Bharat. Sorry, that's my bit. तो यहीं से मैम मेरा एक और क्वेश्चन निकलता है कि आप लोगों ने जैसे अभी बात की कि द स्टोरीज दैट वर चोजन बाय डाइस मीडिया वर अमेजिंग। तो जैसा कि हम देखते हैं कि 25 मिनट के एपिसोड के अंदर दे टॉक अबाउट सोल्जर्स ट्रॉमा आफ्टर वॉर, एंड उसके साथ साथ हम एक जनरेशन गैप के बारे में भी एक पॉइंट रेज किया जाता है सेम एपिसोड के अंदर। सो आई वुड लाइक नाजनीन मैम एंड नमन सर, गिरीश सर टू थ्रो सम लाइट ऑन दिस। So ladies first. Sorry, I didn't get the question. This girl suddenly came up and sat me. That's Rihanna. Hey, That's my cutie. daughter. Say hi. Hello. Hello. Really, I'm so sorry. I've lost the Yeah. question completely. Yeah, ma'am. So my question was that since Dice Media chose some really amazing stories, so in that 25-minute episode, it covered some very sensitive topics like a soldier who is going through trauma after war. Apart from that, there was another topic that was generation gap. So, ma'am, your take on this? Generation gap. I'm sorry. About which particular episode? Yes, are you ma'am. referring to? The episode 4th, ma'am, in which Naman sir basically is like You're talking at the generation gap between the generation father gap, and the son. father and the son, ma'am. Yeah. You know, it's so funny because I think that every single generation goes through the same thing. I'll explain that because I'm really going through that right now. My boys are both teenagers. और हम जब when we are growing up हमें हमेशा लगता है कि we are so cool and we are going to be the greatest parents and we are going to be very modern and we're going to give them enough freedom and and the generation gap is so vast by the time your kids are growing up that there is a huge generation gap. So a lot of what a lot of the struggle that the father and son were going through and me as the mother and the sort of being the intervention person is very real in my own home. And yes, there is a generation gap. It's no matter how forward and evolved you are, the next generation is so much more ahead that there's a huge gap. From thinking to interests to choice of music, every single thing. And yeah, this the generation gap, of course, in the episode case was obviously stemmed from the fact that he had not been with his father as much. No, he had not been with his father, and
I think that led to more than generation gap, a lot of miscommunication and misunderstanding, more than generation gap, I think. But of course, then the generation gap also plays a role. Things like passing your time playing video games instead of wanting to go out and be with your parents or be with your dad. And I think that as mothers, we kind of start accepting that, but fathers still want to hold on to that role of being able to be close to their children. And it's a constant struggle. It's a constant struggle. Whether you're in the house, whether the father was not there with the child, both ways, it's still, there's always a generation gap. I hope I've answered your question. I just like to add something to what ma'am said about generation gap. I was talking to some friend the other day, and we were just talking about this subject about like, oh, how are people like how was the generation gap when like we were 16 or 17? I think तभी generation gap ऐसे 20 साल का होता था. अभी generation gap 5 साल का हो गया है. Because I'm 26 and I don't know what 20-year-olds are talking about. Because I legit feel like there's a generation gap between like 27-year-olds and 17-year-olds. Like it's become so small. Everything is like damn quick, Everything's cramped like, inside. yeah. Like 30 What years happened? is now 10 years. It's so weird. Time has warped completely. So true. No, even I believe this because see, there's so much happening. There's so much coming in, going out. Everyone's thinking 100 things and speaking about 100 things. Yeah. So I think that generation gap has to come, and it does come. And it's very weird to see, how when you're in a conversation, be it with your dad or an elder friend, you're just like, somewhere something is lacking out. As you quote in like millennial language, there's FOMO for everything. Yeah. But I don't know. I mean, see, with my dad also, I believe that he's always been the 2011 cricket fan. Like he loves that team. He'll always compare the present players to those players, and these are the little things that happen. He's always like, "Ke wo time ke gaane अच्छे थे, and Mohit Chauhan used to rock," and I'm like, Arijit is also not bad. And things like these always happen. Like there's a banter. There's always something that has to happen between the father and the son. But especially about this episode where I had a gap with Giri sir, it actually was very understood because this kid was living without his father for over 15 to 16, 20 years. And it's tough. I mean, these years are most essential for you because you're growing up in that years, and a father figure is very important. Anytime they always teach you how to stand up. Like for me, I've been very lucky that my father always was there for me. But for people, for kids especially who have army dads and army soldier family relatives or something, they always feel that there's something that's lacking, and still they fight it out, they battle it out, and they come out super strong. And I don't know, in this episode I only felt that when my dad came back, uh, instead of sorting things out, I took all my anger out. And that's what happens with a frustrated today's generation kid, where you want everything, but everything never lines up, everything never comes to you easy. You either have to understand how to face the dark side of it, gray side of it, and move on, which I failed, but eventually I realized in the episode. So that gap actually was a very important message for, it's actually very relatable also today. मैं अगर बात करूं 1960s से लेके अब तक के सिनेमा से मैं काफी हद तक वाकिफ हूँ. उसकी वजह ये है कि मेरे पहले की तीनों जनरेशन सब फिल्मी बफ्स थे. मेरे डैड वाली साइड भी, मेरी मॉम वाली साइड भी. तो मेरे से अगर आप तब से बात करें तो मैं अब तक अपडेटेड हूँ. और अब तक की मैक्सिमम डिस्कशन, सिनेमा हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वहां पे जनरेशन गैप ये टर्म बहुत यूज होती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम और चैलेंज फेस करते हुए हम आए हैं आज तक. लेकिन अभी एक नई टर्म की शुरुआत हुई है डाइस मीडिया से, जिसको बोलेंगे ब्रिज बिटवीन द जनरेशंस, जिसको बहुत ब्यूटीफुली अगर बोले तो इस स्टोरी और बाकी की स्टोरीज में भी अगर देखा जाए तो सबकॉन्शियस माइंड में हाउ टू मेक दैट ब्रिज बिटवीन द जनरेशंस, जहां पे दोनों एक दूसरे को कन्विंस करते हैं अच्छाइयों के लिए, बुराइयों के लिए, और एक दूसरे की बात को समझ के आगे बढ़ते हैं. क्योंकि मैं उस पीढ़ी से हूँ जहाँ टीचर बात बाद में करते थे, डंडा पहले उठाते थे, धुलाई करते थे और मुर्गा बनाते थे. और आज उस जनरेशन को भी देख रहा हूँ जहाँ पे उसको थप्पड़ मारना या डांटना भी अलाउड नहीं. तो बहुत सारे
चेंजेस देखते हुए मैं आया हूँ, और मुझे लग रहा है कि ये टर्म जो है ब्रिज बिटवीन द जनरेशंस, ये स्टार्ट यहाँ से हुआ है अच्छे तरीके से। तो जैसा कि अभी गिरीश सर ने थोड़ी देर पहले बोला था, काफी कॉम्प्लेक्स स्टोरीज आपको 20-30 मिनट में कंडेंस करके प्रेजेंट करनी होती है। तो आप में से किसी को कभी ऐसा लगा कि एपिसोड की लेंथ काफी कम है और थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं? क्या आपको कभी कोई डिफिकल्टीज हुई, कोई चैलेंजेस थे स्टोरी को प्रेजेंट करने में? अनुष्का मैम, आपके लिए कोई चैलेंजेस? I really feel for an actor it wasn't, but I think for the creators it was definitely a challenge, not a problem but a challenge, because emotion itna bada hai. When you are performing that emotion, when you are there, आप उसको 100 इंटेंसिटी पे फील कर रहे हैं, वो हो रहा है, बट फिल्म मेकिंग इटसेल्फ इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट आर्ट. सो अगर वो चीज हमने फील कर लिया और वो हमारे ऑडियंस तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, then we are feeling somehow somewhere. But I think talking about the screening and talking about the people, their reviews and their, you know, the DMs everywhere, so I think people got connected. जबकि मैं honestly बताऊं तो क्योंकि मैंने वो चीज परफॉर्म करी है, there was this particular, there were 2-3, I mean मेरे 2-3 बहुत ज्यादा ऐसे सीन थे जहाँ पे विभा की बहुत like the Vibha was there. I mean, बहुत सारे scenes पे मुझे ऐसा लगता है कि यार there were scenes जहाँ पे Happy was like कि अरे अनुष्का super, we got this. मैंने कहा नहीं, I just think like we can give more to this, we can do something to this scene. I mean, और वो हुआ, और मुझे ऐसा लगा कि शायद वो ऑडियंस तक उतना पहुंचा या नहीं पहुंचा, मेरे लिए क्वेश्चन था, क्योंकि वो ड्यूरेशन वाज द सबसे बड़ा क्वेश्चन उस चीज में. बट लोगों तक वो चीज पहुंची, तो आई थिंक दैट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस. बट या इट वाज डिफिकल्ट. जैसे आप ही के एपिसोड में एक सीन है जहाँ पे विभा फाइनली बिकम्स एन आर्मी ऑफिसर एंड देन शी स्टार्ट्स हैविंग अ ब्रेकडाउन इन फ्रंट ऑफ हर हस्बैंड्स विजन, जहाँ पे वरुण सर इज वेरी काम बट यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशंस. सो वाज दैट डिफिकल्ट टू पुल ऑफ? So some other director of mine, I mean, I worked with him, so I got a screenshot. He just sent me a screenshot. एक editor का who is editing this film, and he told me कि अनुष्का का एक scene है वहाँ पे, I got to know she has worked with you, and there's this particular scene जहाँ मैंने 1-1.5 मिनट सिर्फ there's just one, मेरे को space ही नहीं मिला because of the performance to give a cut. वो एक ही शॉट है, वो 1.5 मिनट का शॉट है, एंड लाइक मुझे टेक्निकल चीजें ज्यादा समझ नहीं आती. मैंने कहा सर ठीक है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो देन द अदर डायरेक्टर टोल्ड मी, अनुष्का, फॉर एन एक्टर, फॉर एन एडिटर, इट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर एन एक्टर कि उसको उस परफॉर्मेंस से कटने का ही मन नहीं किया. तो आई थिंक अगर हम वो ऑडियंस तक पहुंचा पाए तो, बिकॉज फॉर अस तो व्हेन आई वाज डूइंग दैट सीन नो, and that's sort of an actor who gets into it, and मैं ना बहुत जल्दी project से detach हो जाती है. I don't know which is a good thing or a bad thing. I don't know कि where it's gonna fall. I don't know कि audience पर बहुत सारी अच्छी चीजें बनती है जिसको हो सकता है कई बार हमने उसको बहुत अच्छे से जिया, पर ऑडियंस को शायद वो उतनी अच्छी नहीं बनी. और मैं बहुत ज्यादा I really want my audience to review it like honestly review it. आपको पसंद आया नहीं पसंद आया, हमने तो बहुत दिल से बनाया, पर ये एक ऐसा प्रोजेक्ट हुआ जो हमें भी पसंद आया और ऑडियंस को भी काफी ज्यादा पसंद आया. तो या आई एम हैप्पी फॉर दैट. वी ऑल आर हैप्पी फॉर दैट. थैंक यू गाइस. क्या बात. वरुण सर, आपने सेम सीन में काफी वेरिंग इमोशंस डिस्प्ले किए थे, तो क्या वो मुश्किल था? Not really, to be very honest, this was day one of shoot for us. Yeah. And like Girish sir said, I had not met Anushka before, but whenever I asked anybody who's playing Viva, I was told that there's this amazing actor, and we met for the reading and cut to day one of shoot, and we've been told that you're doing this heavy scene where you know she's done it, and it's like the crescendo for this character. And I still remember, and I want to compliment Anushka again. I've already told her, but this was amazing to see. They called action. We were given a frame that this is the space that you can move around in, and she would cycle in. She threw her cycle. She did the entire thing. Happy, the set, me, we were like, wow, I think we got this in the first go. But Anushka being Anushka, she said, hey, Happy, let's do one more. And Happy being very considerate towards
the actor, he said, Anushka, take your time. Let's take 25, 30 minutes. Doesn't matter if it's an outdoor thing, dhoop hai, lunchtime ho raha hai, doesn't matter, you take your time. This woman within 2 minutes कहती नहीं बस मेरे को 2 minutes दे दो. She would go to a corner, come back with the same intensity, and if I'm not wrong, she did this thrice, and every time better than the previous one. Talking about my character, if you read the script, there's nothing mentioned for Vikrant. But Happy and I, we just got talking, and we came to a conclusion that let's just play a contrast, and it'll be fun to see. So there was one take where even I was getting a little emotional, but एक वो जो हम मजे के लिए करते हैं as actors, ये लोग यार एक खेल के देखते हैं. I think One that for was the love of cinema. one for the love of cinema and the art was the one that made it. I said, I don't think my character firstly is real. It's a voice in our head, right? So the voices in your head can say anything, and they do say a lot of things, right? So I said, let it be completely off. So if you see, I'm smiling at her while she's broken down. So that was really fun to play with. It was a very playful. Varun used to come with something different. Honestly, I mean, that's a very, very beautiful thing. He said, like, on paper, if you read about Vikrant, so Vikrant is just the voice of Vibha's head. But I mean, bringing like a figure to it was what Varun did beautifully. Thanks, man. And this again, I want to compliment the writers for this. The initial draft for our short film was without the actor, was without Vikrant's character at all. But Harman Singha and Sahaj Maini, who are the writers on this, they said, let's play a spin-off on P.S. I Love You. Let's do a treatment of that where the husband keeps coming back, just somewhere or the other, just to connect a little bit. So that's kudos to the writers, I think. I'd like to, I'm sorry, I'd like to add a little bit about, like, we were talking about, like, if it's a shorter piece, does it get difficult? I think at the end of anything, it's just, if you're doing something honestly, it doesn't matter if it's like 3 hours long or if it's like a minute long. If you've put in your heart and soul and you're honestly trying to say something, I feel like people will somewhere connect with it. And I think that I think everyone will agree that sort of happened with each of the stories, that we gave it all our honesty. Like, we were completely there in the moment for that. That's what I felt like when I watched the entire show. It felt like everyone did what they were supposed to do really well. Like, the writers wrote it well, the creators created it well, the actors performed well, the DOP shot it really well. And I think that way it just came together really well. And then I feel like then the duration of it doesn't really matter. If you're honest, then you can express in a minute, or you can take 30 minutes, or you can take an hour. You will still be true. Very true, man. Can I add something? I just felt like, you know, when you're just so much in love with the character or the scene, you always want it to happen more often, you know, like, or those shot or एक shot. And especially that scene, the scene where I cry, and for all of us, I think this is the common thing, that all are top notch. Like, the scenes, the core scenes of the stories, those scenes we all love to do, yeah. And I think we wanted a lot more from it. We wanted to do 2-3 takes more, but I think it was a great experience, thanks to Dice. And I swear, I mean, I've never had such an extremely good experience in my life. It was really good. Like, we worked for 3 days, and on the third day, I didn't even realize where the 3 days just went by. And it was too good, like, really good. Yeah, Also, I have, yeah, please, sir. मैं कह रहा हूँ ये यार, ये कास्टिंग किसने की है? क्योंकि पहली स्टोरी उठाओ तो सयन का आप एक कॉन्फ्लिक्ट देखो, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्फ्लिक्ट है जिसको वो कन्वे करके निकल जाता है. फिर शक्ति सर तो हैं ही, चलो उनको तो मैं कौन होता हूँ उनके बारे में बोलने वाला. फिर ओमकार का जो था लड़कपना, बेपरवाहपना, और उससे जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन थी एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के लिए. फिर इनकी जो स्टोरी थी अनुष्का वाली और वरुण वाली, वो जो सीन्स आप बता रहे हैं कि वो उसकी इमेजिनेशन बन के आता है सामने, वो इतनी कन्विक्शन से आए हैं ना, वो सीधा दिल को टच करते हैं और सोचने पे मजबूर होता है आदमी कि यार कितना ब्यूटीफुली इसको एग्जीक्यूशन लेवल पे या राइटिंग लेवल पे कितनी कन्विक्शन से लिखा गया होगा. और थर्ड जो थी रोहित वाली,
उसमें भी जो वो भागता है बुलेट के पीछे, अनूप सोनी जा रहे हैं और ये पीछे भाग रहा है, कैसे सीन यार, कैसे लिखा गया होगा और कैसे परफॉर्म किया होगा, कहाँ से वो कनेक्शन आई होगी, ये सोच सोच के लगता है कि नहीं यार बहुत अच्छा काम हुआ। लास्ट वाली वीरा में भी जो लेटर जब पढ़ा तो टप 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 ऐसे आंसू गिरते हैं। तो ये मतलब पता चल रहा है कि अच्छी खासी प्रेप, अच्छी खासी जेमिंग, और एक दूसरे के बाल नोचे गए होंगे लिखते वक्त कि भाई ये गलत सीन है, ये अच्छा सीन है। तो ये जो टीम है और जो अपना जो डाइस मीडिया हो गए और ये जो डायरेक्शन टीम हो गई, बहुत मेहनत की हुई है, वो दिखती है। वो डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है वो बहुत खतरनाक रहा होगा इन स्टोरीज को बनाने का। शिवेंद्र, you muted. या सो रोहित सर, मेरा क्वेश्चन आपके लिए, जैसे हम एपिसोड में देखते हैं स्टार्ट के अंदर, तो आपका कैरेक्टर काफी एक ऑपरेस्ड इंसान का होता है, लेकिन एंड के अंदर आते आते लाइक यू आर अ फुल फ्लेज्ड ऑफिसर। सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट वुड हैव चेंज इनसाइड द कैरेक्टर? उसके अंदर क्या चेंजेस आए होंगे फंडामेंटली जो जिसने उसको एकदम एक्सट्रीम एंड के ऊपर फ्लक्चुएट करवा दिया? आई थिंक जब वो अपना काम करता था, कचरा वगैरह बीनता था, आई थिंक वो उसको कभी नीची नजर से देखता नहीं था ना, उसको कभी अपने काम में शर्म थी। ठीक है, वो अपना काम करता था और घर आता था। उसके बाद जो जो शूटिंग करता था ना, वो उसकी इच्छा थी, वो उसका पैशन था। यू नो तब उसका पैशन ये था कि मुझे शूटिंग करनी है। ही वाज नॉट नोइंग अबाउट कि एक एकेडमी भी होती है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं एंड ऑल दैट। फिर हाफ ऑफ द स्टोरी जब त्रिभुवन की लाइफ में आते हैं, एंड जब वो बताते हैं कि आप आर्मी में जाओ, आर्मी में ज्वाइन करो, वहां पे आपको मिलेगा। तो सेकंड हाफ के बाद जब वो आर्मी में जाता है ना, तो वो आर्मी ऑफिसर बन चुका है। तब जब वो ट्रेनिंग कर रहा होता है आर्मी की, आई थिंक तब उसका आर्मी में जाना उसका पैशन होता है। जब वो आर्मी ऑफिसर बन जाता है ना, तो उसको उसके अंदर कहीं ना कहीं एक प्राइड है, और आई थिंक उसके अंदर वो एरोगेंस नहीं है। अगर आप लास्ट में भी देखोगे ना, उसके अंदर किसी तरह का कोई एरोगेंस नहीं है। जिन भी लोगों ने उसको नीची नजरों से देखा है ना, वो भी अब उसके लिए तालियां बजा रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक वो बहुत नेचुरल था। किसी के भी साथ भी, जिसने अपनी जिंदगी में बहुत सारा दुख देखा है, दुख देखने के बाद जब वो एक मुकाम पे पहुंच जाएगा ना, उसके बाद भी आई थिंक उसका जो नेचर है वो कभी नहीं बदलेगा। ही विल बी ऑलवेज बी डाउन टू अर्थ। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा घमंड अगर किसी को होना चाहिए तो वो आर्मी ऑफिसर को होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। दे आर वेरी हम्बल एंड आई थिंक या दिस इज व्हाट आई हैव टू से। तो इसके बाद ब्रेव हार्ट्स के बाद आप लोग कौन कौन सी स्टोरीज पे काम करना चाहेंगे? ओम सर। सो यू म्यूटेड। यू मीन अगला प्रोजेक्ट के लिए या हाँ लाइक हाँ, से लाइफ अगला में? प्रोजेक्ट। हाँ, अगला प्रोजेक्ट मैं एक एक्चुअली खुद का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। मैं लॉकडाउन में 3D और गेम डेवलपमेंट सीखा मैंने। तो करंटली आई एम वर्किंग ऑन I have converted myself into a 3D model, and now I am trying to animate that 3D model and make content with it, if that makes sense. तो मेरा अगला प्रोजेक्ट तो वही है। मैं बहुत टाइम से इसे फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई हैव सम लिटिल ब्रेक थ्रूज हियर एंड देयर। तो अनरियल इंजन नाम के एक सॉफ्टवेयर में मैं उसे बना रहा हूँ और एनिमेट कर रहा हूँ। और अगला प्रोजेक्ट शायद एक फिल्म का प्रोजेक्ट है। तो एट दिस पॉइंट मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता उसके बारे में, पर आई फील लाइक इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट्स और इंटरेस्टिंग कहानियां जब होती है तो करने में एक्साइटमेंट बहुत ही ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हम कुछ भी शूट कर रहे हो उसका बेस तो उसकी स्क्रिप्ट होती है और उसकी कहानी होती है। तो आई फील लाइक ब्रेवहार्ट्स के लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही वही था कि जब पहला ड्राफ्ट, मतलब मैंने जो पढ़ा था वो आई थिंक स्क्रिप्ट का 3rd या 4th ड्राफ्ट था मेरे एपिसोड का। और बाय द टाइम हमने शूट किया और 3-4 ड्राफ्ट्स बदल के अपडेट करके सेट पे आए थे टीम की तरफ से, डाइस की। और आई फील लाइक सेट पे जब हम पहुंचे तब जो ड्राफ्ट हमारे हाथ में था वो ही इतना स्ट्रांग था कि उसके आगे मतलब व्हाटएवर वी डू उसके आगे अच्छा ही होगा। मतलब वो स्क्रिप्ट का बेंचमार्क ही इतना बढ़िया लेवल पे सेट हुआ था कि जो भी चीजें हो रही थी वो उसके ऊपर हो रही थी। दैट्स व्हाई द ओवरऑल शो काइंड ऑफ केम एज इट डिड। बट या आई मीन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स तो करने की हर एक्टर की इच्छा होती है। तो अगला प्रोजेक्ट तो वही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर करने वाला है।
And Sayan, sir. I'm Sorry? sorry, go on. No, go on. Just an open-ended question. Yeah, I'm actually excited. मेरे को थोड़ा excitement अपना रोकना पड़ेगा because I think the other show which I shot with Dice only, वो इससे पहले मैं shoot कर चुकी थी और Bravehearts अब आ चुका है. Now it's finally coming, so guys, please watch. And I'm so happy कि मैं उसका नाम बता सकती हूँ. So this is for Disney Hotstar, घर वापसी for with Dice Media only. And the other show for Amazon Prime is releasing. I'm so excited because इन shows के लिए मैंने साल भर कहीं मैं इनका नाम नहीं ले पाई हूँ. So Crash Course is releasing. So please guys do watch for Amazon Prime. Then there's this show for Sony Live as well, जिसका मैं नाम अभी नहीं बता पाऊंगी. So please go watch and please honestly review like how you guys find the story, my character, performances, everything. Always waiting for you guys. Ma'am, we'll definitely watch those shows. Sandeep, sir, do you have any future projects in mind? Future projects in mind and future projects happening are two different. Do you want to know what work I want to do, or do you want to know what work is gonna come out? Either one works. Either one, okay. I'll give you both. So I think अभी 3 shows मैंने shoot किए हैं. एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है. I think हम उसमें mental health के बारे में बात कर रहे हैं, and it's a very interesting part. तो वो आने वाला है. अभी वो कौन से प्लेटफॉर्म में आएगा वो पता नहीं, लेकिन हमने शूट किया उसको. कल ही मैंने एक और शो रैप अप किया है. वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. आई थिंक सो देयर आर इंटरेस्टिंग थिंग्स कमिंग अप. बट जो मैं करना चाहूंगा, आई थिंक मैं वो तो काम बहुत करना लंबी चाहूंगा लिस्ट है. हाँ, मैं वो काम तो करना बहुत चाहूंगा. लंबी मैं लिस्ट है. चाहूंगा कि काम आता रहे, क्योंकि आई थिंक जिस स्पेस से मैं आ रहा हूँ, मैं दिल्ली से बॉम्बे आया हूँ, और जब आप उस जर्नी से आप आते हो तो आई डोंट थिंक सो वो, मुझे लगता है वो मुकाम बहुत बाद में आता है, एटलीस्ट मेरे लिए, कि जहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि मुझे ये करना है. आई थिंक आज के डेट में मुझे जो कैरेक्टर्स मिलते हैं, मैं उसको कितना इंटरेस्टिंग, या आई थिंक अपने प्रोसेस को कितने अलग तरीके से, आई थिंक हर एक्टर के अलग अलग प्रोसेस होते हैं. आप हर काम के, हर कैरेक्टर के थ्रू आप अपने अलग अलग प्रोसेसेस को ट्राई कर सकते हैं, और कुछ लगेंगे कुछ नहीं लगेंगे, बट दैट्स द जर्नी. बट वो करने में जो मजा आता है, आई थिंक आई एम इन अ स्पेस की जहाँ पे काम मिलना चाहिए. बाकी अपने प्रोसेसेस में फिट करता रहूंगा, और आने वाले 4-5 साल पे आई थिंक वो मुकाम आ जाएगा जब मैं बोलूंगा नहीं वो नहीं करना, ये करना है. तो देखते हैं. So yeah. It's very easy to be an actor. It's very difficult to be a working actor. Oh, who is this? Who will say this? Who will say this? Who do you think will say this? One and only you, bro. One and black only. and white. तुम तो शक्ति कपूर सर के टाइम से हो यार, black and अरे white. यार. तो ओमकार सर, मेरा फिर से आपसे एक क्वेश्चन है, क्योंकि आपने अपने गेम डेवलपमेंट वगैरह के बारे में बताया, तो आप ई स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्टेड हो? आर देयर एनी गेम्स दैट यू प्ले? या मैं रिसेंटली, मतलब पिछले 1-2 साल में F1 का बहुत बड़ा फैन बन गया हूँ. तो मैं F1 2020 खेलता हूँ अपने पीसी पे. मैंने बेसिकली अपने अनरियल इंजन के लिए एक पीसी बिल्ड किया अपना. बहुत फन कूल रिग है वो. तो मैं उस पे गेमिंग तो करता हूँ. अभी मैं फिलहाल स्नाइपर एलीट 4 खेल रहा हूँ, और मतलब साइबरपंक. आई लाइक स्टोरी बेस्ड एडवेंचर, लाइक थर्ड पर्सन काइंड ऑफ गेम्स. Oh man. That's more my thing, like God of War या फिर Assassin's Creed. You can say that this is not generation gap. This is just like knowledge gap. I have no fucking idea of this. I was Omkar. just What he's talking about. generation gap. That's generation gap. I was No, no, That's no. generation gap. no. Let me share this, Omkar. तुम्हारी ये सब बातें सुनने के बाद I'm feeling like a noob. But मैं शिवेंद्र, I just wanted to say something. रोहित, जिस तरीके से आपने बोला ना कि आपने अपने कैरेक्टर को अप्रोच किया था इसके लिए, यह बहुत कमाल यार. मतलब लेजिट बहुत कमाल. मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया. मतलब जिस instead of going within the surrounding spot, it's a very interesting thing. I think I want to try that. I'm going to try it for sure. I was thinking the exact same thing. बहुत कमाल. Thank you so much. Thank you.
Yeah. जैसे 4th एपिसोड में गिरीश सर, नमन सर, नाज़नीन मैम तीनों एक साथ काम किए और उस दौरान कोई मुश्किलें आई हो काम करने में, तीनों को एक साथ कोऑपरेट करने में, ऐसा कुछ हुआ या? अरे यार वो लाइट जो थी ना, आइलैंड लाइट से फ्लिकर कर रही थी. सॉरी मैम. मुझे मड आइलैंड से लालबाग जाने में बहुत प्रॉब्लम हुई मैं एवरी वही कह रही थी, वो जो लाइट थी ना वो बहुत फ्लिकर कर रही थी. डे. बाकी द शूट वाज एब्सोल्युटली स्मूथ. बस जेटी से मेट्रो से ट्रेन से घर वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग दैट यूज्ड टू Those of हैपन. you who don't understand what basically Naman is saying in terms of mud, Bombay is one city. Then Yeah. there's a small patch of the sea which you have to cross Island. through. It's a mud island actually. Yeah, We have an but island. so basically you have to cross it. You can take a jetty, or it's a long road to go there. Right. And Naman Right. stays in the other part of the city, so it's a Yeah. long journey. Yeah. ये नमन और नाज़नीन भी इसमें इस बात को मानेंगे कि हमारे सीन्स ना बैक टू बैक थे. हमें सिर्फ वैनिटी में जाके सिर्फ पानी पीने या वॉशरूम जाने या चेंज करने का ही टाइम मिलता था. तो जब थर्ड डे हमारे 4th एक्टर आए तो हम तीनों को थोड़ा सा ये रिलीफ था. कोई आया है, कुछ सीन बटेंगे, कुछ गैप मिलेगा. बहुत एग्जॉस्टिंग था, लेकिन सीन्स भी इस तरीके के थे कि सब हाई ऑक्टेन थे. सब में रोना धोना, चिल्लाना विल्लाना बहुत ज्यादा था. बट भरत ने, डायरेक्टर ने बहुत अच्छे से उसको प्लान किया था. उसने स्टोरी वाइज वो सीन्स वैसे प्लान किए थे कि लाइटर वाले पहले खत्म हो जाएं, मिडिल मूड, फिर बहुत हैवी सीन्स जो है वो लास्ट में और बिल्कुल एंड में रखें, ताकि वो ग्रेजुअली उसी तरीके से कन्वे हो जाएं जो दिखा भी स्क्रीन पर, रिफ्लेक्ट भी हुआ. ये ऐसे ही एक्चुअली ऐसे ही प्लान हुआ था. मतलब हम लोग ने फर्स्ट डे पे बहुत इजी सीन, नॉर्मल कॉन्वर्सेशनल सीन रखे थे. सेकंड डे पे सर ने बोला था कि उस दिन हम सिर्फ पूरा मॉर्निंग से लेके जब तक वो सीन नहीं होता तब तक वो ही करेंगे जो कोर इमोशनल सीन था हमारे और स्टोरी का. और थर्ड डे भी एकदम इजी था क्योंकि सर को नहीं चाहिए था कि थर्ड डे पे यू नो लास्ट डे होगा तो सब रशी रशी होगा. तो सेकंड डे आराम से हमने चूज किया और हमने सेकंड डे पे ही वो मेन सीन खत्म किया बहुत आराम से और बहुत मजा आया था. छोटी छोटी चीजें बहुत काउंट करती हैं. जैसे अभी बताया अपना रोहित ने कि अनूप से बात नहीं करने दी गई. वो क्या होता है, वो एक हिडन केमिस्ट्री होती है, वो वर्क करती है. तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं. हम इनको टू बी ऑनेस्ट गिरीश सर और मैंने भी ज्यादा बात की नहीं थी मतलब सेट पे. वो पता आई थिंक मे बी गिरीश सर का कॉन्शियस प्लान था कि हम ना ही करें क्योंकि हमारे में कनेक्शन है ही नहीं. हम भी बहुत बेसिक, मतलब हम जब भी सीन के पहले बस पढ़ते थे स्क्रिप्ट तभी बात करते थे एक दूसरे से. नाज़नीन मैम और मैं तो बहुत बात करते थे, लेकिन गिरीश सर और मैं काफी कम बात करते थे. एंड आई थिंक दैट हेल्प्ड. You did it deliberately also. I yeah that helped us. Serious scenes, whenever we were doing all the serious scenes, as soon as cut was there, no one was talking to anyone. You would go in your one corner, and for one second I thought, what's happening? I mean, why is everyone so unfriendly today? And then I thought, no, everyone's in their own little zone. Yeah. We wanted to maintain that zone, and it was planned so well that all those same zones had to be done together. And so it was so easy for the actor as well to stay in there. The fight happened, and then the arguments happened, and then all of the serious ones. It was, I think every single part or aspect of this entire series has been planned so well. Like Giri sir also said, is that the distillation, the writers must have broken their head, the drafts and everything, the cast and everything, and the way it was planned and scheduled, and then of course the support system. I think everyone came together so beautifully that it's looking beautiful. All the episodes, each and every, you can't choose a favorite one or something. Also, it was excellent. My personal challenge was that I was supposed to cry, and so I remember Bharat and I, the first day I asked him, I said, do you want crying? Do you want tap 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 pani? So please tell me beforehand because I don't do that. But then we kind of realized that no, she's a tough mother, no? So she's brought up this child together. She's not going to be one of those people who do tap tap pani. But of course she gets emotional towards the end. So challenge wise, that was mine. Otherwise everything was just effortless. We just reacted with each other, and that was beautiful, I think. Since even we're I talking and about, one, if I may, sorry, Anushka, after even you. I and one never used to talk, but we have different reasons. I pulled a fast one. Basically, I pulled a fast one.
we were supposed to meet before shoot so that we could break the ice, get to know each other, and work on the script. I'm But, gonna kill you, Varun, for this. I had my own things going. I said, I'm not going to meet you because there's one emotion we've not talked about, which is when somebody leaves you, there's a lot of anger you have towards those people. So I was just trying to trigger her in different ways. It did not work out. What I was talking about was one thing that I really want to commend the makers of the show is, and as a Fauji brat, I can say this: all these army films that have been made, it is very tough to get the uniforms right. And we as a Fauji family, we are looking to point out these things. To be very honest, we're like, वो star नहीं था, वो emblem नहीं था. So again, kudos to Dice. The uniforms were on point, and the whole the world, the Fauji world, has been so beautifully shown that it was just so real. So good stuff. And I'm so jealous about this because Omkar, Adhya, Rohit, everybody got to, even Very like important. everybody got to wear the army costume, and Army costume. I was didn't lucky. get it. I was lucky during my costumes. I got to wear it. They didn't use Yeah, it. When my even costume Girish was sir there. wore it. Even Girish Yeah, sir wore yeah. it, but The I promotion. didn't get to wear it, The and I'm very jealous about it. Oh. Shivendra, Yeah. you're muted. Yeah, ma'am. So we have this segment for you all, in which we would be showing you some scenes from the web series. So I would like the tech team to present them, and you have to comment over those. Comment. Yeah, like I'll tell you questions. Just wait Okay. for it. Fun. No, we can Yeah. say, or we can Okay. say Yeah. no comment. No No, comment. no. No. Yeah. Love this one. Yeah. Already So my favorite scene. Already my Yeah, favorite scene. yeah. So firstly, can you tell us some background of this scene? Like, what was the atmosphere like? Like, which scene is this? Then you want to go first? This was the last scene on the second day shoot. We were rushing. Yeah. Light Extremely. जा रही है. चलो चलो Light चलो जा रही ये है. चल We रहा था. have to do this. It was totally rushed. Like right now, you can only see these characters sitting. Right behind is a plethora of people just like going like they all have got some. They have to not waste time. So we were all quite in a rush. But I think, yeah, it was a fun scene, man. I think how Omkar's character Kishore, who is basically introducing everybody. It was actually very, yeah, man. It was a fun scene. It was just done very like we were like, Yeah, चलो yeah. अपना A game लेकर आना है क्योंकि we can't waste time. But yeah, Like I feel like most shoots, I think everyone will like say this, but like most shoots, there is this window of like 5 o'clock to like 6. Like if it's a 9 o'clock like 7 o'clock shoot, you like 7 o'clock you started rolling. There's this window of like 5 p.m. to like 7 p.m. This is the last 2 hours where everyone is like, let's go, let's finish, like the energy is so high in those 2 hours because everyone wants to pack up and go home also. But there is also this sense of, oh, time is running out, the sun is going down, like our light is going. So it's like there's that high energy point, and these points you have to be in your element, you have to bring your A game. Yeah. So And these are one of sorry. no, I am interrupting. In fact, I mean, these are one of those scenes which gives you a very pleasant smile. Like you're just watching the scene and it gives you a smile, like all of a sudden on your face when it's saying, "No, ये तो 10 pass है, ये तो मैं." I remember, so for this scene, like the director and everyone else was sitting in another room, like they were watching it on the monitor, and वहां से वो बता रहे थे क्या करना है mic पे, और like we usually communicate through the camera, like we just look into the lens and we're wearing a mic, so we're just like talking to the director straight up, and they're watching us on the monitor and listening to us on the headphones, and he was like telling us things. So it was one of those scenes ki jaldi karna hai, but like we're also trying to figure out kya karna hai abhi ye scene mein. But I feel like in the end it was very like natural in that sense. और गर्मी बहुत थी यार ये point पे, I feel. Okay, can we have the next scene?
till you're bringing it up, I thought this scene was really hilarious, to be honest. The timing of that last guy when he said, "Many be doctor," but I was like, "Wow!" Landed beautiful. Yeah. Can we have Oh. a bit of the behind the scenes behind this? Dialogue पढ़ के शायद तेको याद आएगा हाँ कौन सा. हर बात पे बटर गश्ती नहीं. So I think this was a steady cam shot. Like basically the camera was on a rig where like a person holds the camera and they're walking around with us. So it was a long shot. Like it starts with we both come inside the house and then he's like, "Arey, you can keep your bag here." And then मैं bag रखता हूँ तो मेरे पास आता है कैमरा और फिर मैं कैमरा क्रॉस करके इस तरफ आता हूँ, रूम में जाता हूँ और फिर बैठता हूँ बेड पे, बोलता हूँ अरे क्या बढ़िया रूम है. So this is like for me it was like this was a character जो जिसका like he has nothing to lose in life and उसका ऐसे कुछ वो नहीं है, लाइफ में गोल नहीं है, कुछ stakes नहीं है. So he was a very like Happy sir, our director. So there were two directors for the show, Bharat sir and Happy sir. Happy sir directed 3 episodes and Bharat sir directed 2 episodes. So Happy sir. Sorry, buddy, I'm coming back in 1 minute. Sorry. No stress, sir. So Happy sir, like we had spoken about कि किशोर ऐसे थोड़ा हवा जैसा है, मतलब उसका center of gravity, he doesn't stand on his 2 feet, he'll keep moving. Like he's fluid. So that was like a brief conversation that we had. So this is the first time Kishore actually came into this person's house जिसको वो अपने पूरे life जानता है. Like he knows this old man who lives across the orphanage, but there was this sense of there was this sense of कि मैं सही से जानता नहीं हूँ इनको, but किशोर को फर्क नहीं पड़ता कि ये इनका घर है या किनका घर है. He's just like, अरे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो मैं तो चिल करने वाला हूँ. एंड वो वही एटीट्यूड से उनके घर में आता है और बोलता है अरे क्या बढ़िया घर है, इतना बड़ा घर है, अकेले रहते हो, आश्रम क्यों नहीं बना लेते यहाँ पे. और वो जाता है उसके बिस्तर पे जाके बैठ जाता है, बोलता है यार बढ़िया डबल बेड है, मजे यार मेरे तो, मतलब इतने टाइम पे मैं बेंच पे सो रहा था, अभी मैं डबल बेड पे सोऊंगा. एंड शक्ति कपूर लाइक मास्टर इज लाइक, you know what, you can't do this nonsense here. And he very strictly says that to me. But I remember after, so he bangs the door on my face and then I do some like random things. I'm just like I do something like that, and then we were watching the shot later on the monitor, and then Shakti sir saw that, like he's like, तू बहुत शाना actor है. I mean, he used a word which I'm not going to use on a live, but बहुत शाना actor है. So I was like, thank you. And yeah, I mean, that's a little behind the scenes. It was literally like when they said action, we were different people. When they said cut, sir used to like joke around and like he was telling us random things. So I think, yeah, it was fun. Yeah, it was a breeze. So can we have the next slide, please? So this one is for you, Varun sir. Since you belong to an army background, so you know that most of the platoons have a song for them. So do you remember any songs from your okay, wait a second. They just yeah. Oh man. Anushka, that till then. Yeah. I like how Anushka. the question and the scene is so different. Yeah, sorry. It was just saying only right. So Anushka ma'am, as you know that You're upside down here. no, we can see that from the role that this needs a lot of effort. So like, are you a fitness freak or like you learn this for all of this for the show itself? She still wants to go to the gym. Of course, she's a fitness freak. Yeah, bro. I was gonna say the same Of course, she's a fitness Of course, freak. she's a fitness freak. Yeah. Just to give Anushka a run up to this, guys. The number of push-ups this girl can do are freakish. If you hear the number, you're going to be a little scared for your own health. She's really good at it. She does about 20, and she does diamond push-ups as well, which is quite tough. She's quite Excuse crazy me, about it's 40 actually now. 40. My bad. My bad. Not taking pangas. Nice flex.
So yeah, I'm a fitness freak, and B specifically for this. I mean, I really wanted, क्योंकि हम लोगों का जैसे सर गिरीश सर ने बोला ना कि हम एक्टर्स तो है ही, बट हम लोगों को वो जो बचपन में वो जो बच्चों का एक जो आइडिया शुरू हुआ था ना, एक छोटे से बच्चे ने जो ख्वाब देखा था कि यार एक मिरर के सामने चुन्नी ओढ़ के और मैं अकेले, मम्मी पापा सो रहे हैं और मैं अकेले ही फेरे लगा रही हूँ कि ये मेरा विदाई का सीन चल रहा है मम्मी कैसे हाथ जोड़ा घर से बाहर चली गई. So I'm that kind of a kid, you know. I was very inspired by Bollywood. तो बॉलीवुड में हम लोगों ने यूजुअली ऐसा स्टोरीज देखी है कि यार देयर इज दिस ऐसा कोई मोटिवेशनल फिल्म होती है ना, तो बहुत ऐसा इंसान की बेचारे की बहुत सैड लाइफ चलती रहेगी, तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा ये वो, एंड देयर इज दिस सॉन्ग जक दे एंड यू आर प्रिपेयरिंग. तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में, मुझे नहीं पता था ये लोग किस तरीके से शूट करने वाले हैं उसको, बट मुझे ये था कि आई रियली वांटेड दैट थिंग, द ट्रांजिशन टू कम आउट रियली वेल, एंड दिस इज स्पेसिफिकली समथिंग, a lot of things I really wanted to do जो कि हम लोग शूट नहीं कर पाए because of that space, क्योंकि जिम में बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं बट लेकिन वहां पर नहीं थे. This is something I really wanted, और हाँ ये तो मैंने इसी के लिए ही सीखा था, and I'm happy it came out really well, and there was no time, so everyone was saying कि नहीं let's not do this. मैंने कहा again अनुष्का, मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं करेंगे and then I went to Happy sir and I'm like, Happy, please, I really want to do this. So it's like, let's find a wall. Happy he's a sweetheart, yeah. He's an amazing director to work with. It was never like कि अच्छा सुन ये बता दिया ये करना है और ये हो गया ये वो करना, और मैं वहाँ पे बहुत restricted feel करती हूँ. I mean everyone has their own way to perform. There are a lot of you are at times the directors actor, but any number of times I really want to bring something. जैसे कि उन्होंने बोला ना, वरुण ने भी बोला कि विक्रांत के लिए काफी कुछ ऑन पेपर नहीं था, but if I am not able to bring something to the character, then what am I contributing to the script? So वहां पर वो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि आपको डायरेक्टर कितना स्पेस देता है. I really want him to brief me a lot of things. We want to jam, but when it is the duration between the cut and the action, I really want him to really believe on me and to have faith on me, and I think he's a beautiful person to work with. So Yeah. Second that. So can we have the Varun sir slide now, please? I just hope a mustache. I want to see that mustache. What's that? There's the picture. I really want to see Varun's mustache. No. Yay! Expecting this. Uncle Chips wale uncle. Yeah. So sir, now you come from an army background, right? So like every battalion has a song for them. So like, do you remember some from your childhood that you used to sing with your father? ये थोड़ा वो है, in the sense not every, can you guys hear me? I'm on mute. Yeah. Not every unit has a song, yeah. And my dad is from the armored corps, so we have जो पहले घोड़े होते थे, cavalries that got converted into armored corps. So these are the tanks. We didn't have a song per se, but we had a slogan, which instills a lot of courage in me, because although I'm not related to the unit itself, but it says aham yuddha virasthale. So that was their war cry. Like Uri mein jo tha, how's the Josh? For our unit, for my dad's unit, it used to be aham yuddha virasthale, which means on the battleground, I'm the most brave that will stand. Wow. So it's things like that. But I want to talk about this scene a little bit. Yes, sir. I remember this is when Anushka, I've just married somebody and gotten her to the family, which is your unit. Pehli baat to we called up my mom right before the scene because Anushka wanted to talk to her and get 2 bits. How does it feel? Which was amazing of her to do her research. But I remember right after finishing the shot, it was something I just thought my parents would have actually lived through this year. When my mother actually married him, he was already an officer, and she came to 84 Armored, which was my father's family, which is how they treat everybody in the unit. And I got a little emotional also, I think. I was telling Anushka the moment we finished, I said, yeah, my dad and my mom have actually lived this in very similar Very personal. circumstances. Yeah, very personal. It was very personal, actually.
I'm glad you've shown this one actually. So Aham Yuddha Veerasthale is the war cry for Dad's unit. क्या बात. Okay, can we have the next slide? Okay, so Oh. do you really know how to shoot, or did you learn how to shoot for this competition? Yeah, I know how to Yeah, shoot. this was actually my question also. Like, did you actually shoot these? No, like I don't know shooting. मतलब मेले में वो जो ग्रीसर बता रहे थे गुब्बारे फोड़ने वाली वो तो शूटिंग करी है. That was my favorite पर game. उसके Yeah, अलावा नहीं. Nilas. Yeah, उसके अलावा शूटिंग कभी नहीं करा. It was my first experience, but it was wonderful. And I think जब So मैं it's टीम से बन actually चुका था ना fighting तो शायद I think वो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे आती है. Like वो आप जब किसी कैरेक्टर में होते हो ना तो आपको लगता है कि ये आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है. तो I think वो करते करते था, but obviously it's very technical thing. So आती तो नहीं थी, but it was fun playing a shooter. Oh, does anyone else know how to shoot? Or Girish, so you mentioned you know how to I shoot. already. Varun sir, yeah, maybe. Okay, so मुझे I think, yeah, go on. No, stupid things यार. मुझे वो प्रिया वॉरियर वाले shoots यार. TikTok. Wow, ma'am, wow. सच में जिम का टाइम सच में हो गया. समझे जोके. Yeah. Okay, so I think with this we can end the session here. I'd like to thank each and every one of you for taking out time from your busy schedules to join us for the session. It was wonderful interacting with each and every one of you, and we got a glimpse of what happens behind the scenes and about the show itself, which is amazing. Really, I watched the show and I loved it. So thank you so much for being here once again. On behalf of Bits Embryo, I'd like to bring the session to a close. Thank you so much. Thank Thank you. you. Thank you for so having much. us. So Thank you for lovely. having us here. Thank you, everyone. Thank Thank you. you. Thank you. Lovely idea. Bye-bye. It was really enjoyable.